start. Assalamu alaikum. डॉक्टर वालेकुम उस्मान अस्सलाम। एंड डॉक्टर नुमान तस्नीम. चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं सिनेरियो से. Dr. Usman, a 30-year male patient has been brought in the emergency department with a history of blunt abdominal trauma. So the patient's pulse is 90 per minute and blood pressure is 110/70. So you have done your ultrasound abdominal fast scan has reveals that there's a free fluid, and you have also done the CT scan, which reveals a grade 3 splenic injury. How will you manage this patient? I will manage this patient according to ATL's protocol. I will take the history from the patient. What was the mechanism of injury? What was the severity of injury? What was the incident? At the same time, I will take. Okay, the patient is I will stable. assess, Patient is stable. Hemodynamic stable with the CT scan. You have done the CT scan, and it's grade 3 splenic injury. What will you do? okay. I will start resuscitation. I will pass two IV lines. I will admit the patient. I will give him fluids, and I will pass a NG tube. I will also, because patient has epigastric upper abdominal injury, he can have later on any respiratory complaint. I will examine his chest. I will rule out breathing problem. I will because he is vitally stable. CT scan already done. I will admit him in high dependency unit. I will give him transamine, and then I will continuously monitor. I will send his baseline investigation, his baseline HB complete metabolic Will you profile. operate upon this patient or not? No, I will not operate upon this patient because he is hemodynamically stable, and I will rule out any. I will examine his abdomen to see any signs of peritonitis, because blunt trauma might have any associated visceral injury. I will like to rule out visceral injury. I will continuously observe this patient with serial examination, because and I will repeat the fast after some time to see whether the fluid increases or not. I will Okay. continue with my conservative Okay, management. you will continue with the non-operative management. Any specific thing you would like to have in this patient? I would like to have angiography of the splenic artery to see whether there is any extravasation of blood or not, and if there is any bleeding. Because patient is still now vitally stable, I will continue with the conservative management, and I will Okay, there's monitor a the patient. contrast blush. So the initial CT scan revealed the contrast blush. This extravasation of the And patient contour. is okay. Then I will. Because patient is stable, I will do nothing because it is a mild injury. And if patient deteriorates, then we can go in. Okay. Okay. Once you have done your primary survey, secondary survey, so you notice that the patient also has the fracture femur. Now, orthopedic Okay. surgeon, they want to fix it. Yes, they want to fix it, then they can. I will give him go ahead because after observation, because chance of fat embolism in fixed orthopedic long bone fracture is high. So from abdominal side, there is a patient is vitally stable, so they can fix it, the femur fracture. Okay. So on third day, so the patient's pain has increased. So the pulse is also increased. The blood pressure is decreasing. Distension is also increasing. Now, what will you do? I will do the fast scan again and see whether there is any paralytic ileus, or there is a free fluid that has increased in the abdomen. If there is any paralytic ileus, then I will treat accordingly, or if there is any free fluid, I will do a repeat CT scan and see whether this injury and So the CT any scan reveals the free fluid. There's a free fluid, and the patient is I will start again resuscitating the patient, and I will uh, do angioembolization of the. I will again do angiography, and if there is any bleed, I can request the interventional radiologist to do angioembolization of the vessel. okay. What are the complications of the angioembolization? It can cause splenic infarct, and secondly, there is a also contrast induced, because contrast induced nephropathy is the one of the major complication of these angiographic procedures. What else?
and also they can have allergic reaction and severe allergic reaction Okay, to the thank contrast. you. Thank you, Dr. Usman. Sir Numan, आप ठीक कुछ है कहना चाहेंगे? ठीक है, बाकी तो ये इसमें एक अनस्टेबल पेशेंट में क्या एंजियोमोलाइजेशन की तरफ जाएंगे या उसको डायरेक्ट लेप्रोटमी पे लेके जाएंगे जब पेशेंट इतना अनस्टेबल हो गया और डिस्टेंशन हो गई है? आप देखें, आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया कि यू स्टार्टेड विद द नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ना। आपको मैंने दे दिया कि इनिशियली पेशेंट हीमोडायनामिक स्टेबल है, ग्रेड 3 इंजरी है। आपने फिर भी उसको असेस किया कि बाकी आपकी बाउल इंजरी को भी देखेंगे कि सस्पिशियस एब्डोमेन को एग्जामिन करेंगे, कोई कंट्रा इंडिकेशन फॉर नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट तो नहीं है। ठीक है, अब ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 के बारे में कंट्रास्ट आपको दे दिया, ब्लश भी दे दिया। तो ब्लश दिया, दैट इज इंडिकेशन ऑफ एंजियो एम्बलाइजेशन स्टार्ट पे ही। ठीक है, so once you have started with the non-operative management angioembolization, non-operative management start करने से पहले आपने ये देखना है कि whether these facilities are available at your center or not. ठीक है, आपने before proceeding with the non-operative management ये आपने रूल एग्जामिनर से करना है, जहां पे where I'm मैनेजिंग दिस पेशेंट, वहां पे ये फैसिलिटी है कि नहीं है, उसके क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट। ठीक है, देन वो इनिशियली हो जाएगी एंजियोएम्बलाइजेशन। ठीक हो गया, फिर उसके बाद मैंने कहा आर्थोपेडिक वाले दे वांट टू फिक्स द फ्रैक्चर फीमर। अब योर प्लान इज नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, अब उसके फिक्स करेंगे तो एक्चुअली यू आर, आप उसने नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या है, कॉन्टिन्यूस यू नीड टू मॉनिटर द पेशेंट। अब वो एनेस्थीसिया में चला जाएगा, आप यू विल नॉट बी एबल टू मॉनिटर द पेशेंट एब्डोमिनल से क्या हो सकता है, उसके दौरान ही उसको डिटेरियोरेट कर दे। ठीक है, पेशेंट इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीड करना शुरू कर दे। तो इनिशियली जो है ना, आई थिंक कि उसको आर्थोपेडिक वालों को, अगर आप यू आर डूइंग विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको अभी इनिशियली उसको ना दिया जाए कि जी आप इसको फिक्स करें। अगर करना है तो फिर दूसरे नंबर को फॉर एग्जांपल के रिस्क ऑफ आप कहते हैं फैट एम्बोलिज्म का, तो बेहतर है कि डू द स्प्लीनेक्टमी, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपका लॉस हो जाता है, आपका ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ठीक है। उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। फिर इसी तरह जो आगे कॉम्प्लिकेशंस की, फिर उसके बाद मैंने दिया है कि यू आर कंटिन्यू विद योर नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। नाउ द पेशेंट इज डिटेरियोरेटिंग, जब भी होगा, जब भी साइन ऑफ डिटेरियोरेशन होगा, दैट इज इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी, कि ठीक आप उसको लेके जाएंगे थिएटर में। अब उसकी एंजियोएम्बलाइजेशन नहीं है, एंजियोएम्बलाइजेशन स्टार्ट पे थी। ठीक ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस, राइट, जो कॉम्प्लिकेशन आपने सही बताई कि ये उसकी स्प्लैनिक इन्फार्क्ट दो तरह की होती है कॉम्प्लिकेशन। एक है एक्सेस से रिलेटेड है, कंट्रास्ट की। एक्सेस से रिलेटेड क्या होता है, अपने फेमरल से जाते हैं तो उसकी जो जो इमीडिएटली हो सकती हैं आर्टीरियल जो है ना, उसमें से जाएंगे ना। ठीक है, ब्लीड हो सकती है, डिसेक्शन हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस हो सकता है, सूडो एनेरिज्म बाद में बन सकते हैं, हीमाटोमा बन सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी जो कंट्रास्ट इंड्यूस्ड जो नेफ्रोपैथी है वो हो सकती है, इन्फार्क्ट हो सकते हैं, स्प्लेनिक जो अगर आपने किया स्प्लीन को किया बाद एट टाइम जो ना, इवन एंजियोएम्बलाइजेशन किया तो बाद में इसको वैक्सीनेशन देनी है, इसकी स्प्लेनिक फंक्शन जो ना वो कंप्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, ठीक। ठीक हो। अब अच्छा, इसी एक तरह जेन पेशेंट मेरा अगर सवाल आता है। of the same patient you have successfully managed with patient with conservative treatment, so on the 10th day patient has developed again presented to you with the abdominal pain is ultrasound CT scan revealed there's a hematoma which is enlarging. Now what will you do? There's Patient splenic is hematoma. unstable. Patient is unstable, has become unstable. Yes. Then I will go for I will again resuscitate the patient according to ATLS protocol, and then because patient is unstable, I will take him to OR and do splenectomy. ओके, हेमाटोमा है, उसके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हुई है ना, इंडिकेशन इज आपने स्प्लीनेक्टमी करी, उसमें स्प्लेनोग्राफी है बाकी, और कंजर्वेटिव दोबारा ट्रायल नहीं देना। ठीक होगा, रप्चर हेमाटोमा ठीक हो गया। ओके, आई गिव यू अनदर सिनेरियो। ये सर क्लियर हो गया, अगला उसके सिनेरियो पे ले जाता हूँ। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे। एक और चीज रिपीट कर ले सर से बोले। इस वक्त, एक और चीज रिवाइज कर ले, ये स्प्लीनेक्टमी के स्टेप्स भी पूछे थे एक दो बंदों से ना, वो भी जरा रिवाइज कर ले। हाँ ओके जी, ओके। इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी के। yes, emergency splenectomy, you have opened up the peritoneum, you are inside, how will you perform the splenectomy for the स्प्लीन trauma? इज ब्लीडिंग एक्टिवली, इस तरह पूछा था कि स्प्लीन इज ब्लीडिंग एक्टिवली। हाँ yes. I will first of all open the lesser sac and take the control after dividing the short gastric vessels. I will directly take the control of splenic hilum remaining very close to the spleen, and after that I will divide the gastrocolic ligament and renal ligament and bring the spleen into the abdomen.
and I will first clamp the bleeding vessel, and then I will mobilize the spleen uh, to remove the spleen. अब इसमें देखें ना यार कि आपने इसमें मेरा ख्याल ये आपने जब गए ना अंदर तो डायरेक्टली योर लेफ्ट हैंड विल गो ओवर द स्प्लीन, आप स्प्लीन की सरफेस हाँ, ब्लीड कर रही इससे होगी ना, लेफ्ट हैंड से यू अपना विल इसको हेल्प पकड़ लेती है, कंट्रोल द ब्लीडिंग विद योर लेफ्ट हैंड। आपने उसमें लेसिसैक में नहीं जाना, आपने पहले स्प्लीन को उसे पकड़ करेंगे लेती हाथ और इस तरह लेफ्ट हैंड से सिर्फ करेंगे, यू विल रिट्रैक्ट द स्प्लीन टुवर्ड मिड लाइन और विद योर सीजर यू डिवाइड द लीनोरीनल लिगामेंट, ठीक है, और उसको किया देन यू मोबिलाइज इट, और उसके बाद अपने स्पैनिक खा लेंगे, यू कैन कंट्रोल इट विद योर थंब एंड द फिंगर, ठीक है ना सर, इस तरह ही है ना। इसमें। हाँ, लेफ्ट हैंड आपने स्प्लीन को पकड़े रखना जब तक आप उसको आखिर तक नहीं चले हाँ जाते ना वो वही कंप्रेशन आपको मतलब। दे रही है वो। और दूसरा आप ये गैस्ट्रिक, क्योंकि इसमें सिर्फ वस्कुलर जो होता है ना वो गैस्ट्रिक वाला होता है, जो गैस्ट्रोस्प्लिनिक होता है, सिर्फ वो उसमें वेसल्स होते हैं, जी बाकी सर, एवं ही होता है जो हाँ किडनी के लाइनोरिनल साथ है या होता है, और ऊपर हाँ किडनी और डायफ्राम वैसे ही होते हैं, उनको वैसे ही आप डिवाइड कर देते हैं। तो जी सर, इसको मेरे ख्याल में आप आखिर में करेंगे, ये जो आपके वस्कुलर जो है ना, इसको आखिर में करती हैं, क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक इंजरी का भी डर होता है। और दूसरा ठीक जो इसको है, आपका पहले कंट्रोल ले रहे हैं ना, वेस्कुलर कंट्रोल ले रहे हैं कि लेसिसैक के थ्रू जाके करना है, वो इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी करें तो उसमें बिल्कुल ठीक है, आप उस पर लगा लें, वो इलेक्टिव लेकिन नहीं जो है। ट्रॉमा के अंदर जो है ना, आपको हो सकता है इतनी ज्यादा लेसरेशन, छोटी सी लेसरेशन है, तो अगर पहले ही आपने टाइम मार दी उधर, ठीक, ठीक है, बिल्कुल। तो इवन इवन अब कंट्रोल लेना भी तो टाइम लगता है उसके अंदर, ये वाला सही आपका है, सडनली हाथ जाएगा डायरेक्ट ऊपर स्प्लीन के ऊपर, इसी मैनुअल कंप्रेशन कर देंगे उसके लेफ्ट हैंड और हम्म मोबिलाइज करेंगे, आप उसके असेस कर लेंगे व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, ठीक, ठीक है। अच्छा चले मैं एक और आपको देता हूँ, 20 year you have received a call that 20-year male has is being transported to your emergency department with the history of multiple stab wounds to the abdomen and the left chest over the fifth intercostal space. How will you prepare your team? as a team leader, I will prepare my team according to ATLS protocol. I will activate emergency response team. I will inform all concerned specialties, blood bank, anesthesia, OR, and paramedic staff to prepare for the emergency. I would also activate massive transfusion protocol before patient arrives, and I will arrange a O negative blood group, RH negative blood group for the patient. And as soon as I will also brief my team that I will assign duties to my team members, that one person has to control the airway, second person has to pass IV line and start bleeding, and I will also call radiologist for if there is any he can help in angioembolization and for fast scan, and I will activate a whole response team, and I will tell that one patient should immediately start the resuscitation, and once the patient arrives, everything has to be prepared after, and one should be having personal protective gear ready. And in operation theater, I will tell them to prepare general set, thoracic set, and vascular set, and be prepared for the emergency Okay. thoracotomy or left. वन थिंग विच यू कैन ऐड, जो चीजें बाकी तो आपने बता दी हैं, जो और क्या कर सकते हैं छोटे अगर करते हैं कि असाइनिंग द टीम रोल, अब इंडिविजुअली आगे बताने की उसको जरूरत नहीं, उसमें टाइम नहीं इतना होगा, आप क्या कहेंगे ईयर के अंदर यू विल मेक श्योर कि द इक्विपमेंट ऑल द इक्विपमेंट इज रेडी, स्पेशली द चेस्ट ट्यूब, इसमें जो आपको जरूरत होंगी चीजें, you make I will make sure the temperature of your ER is optimal, and I make sure the warm fluids are available, so the drugs and everything is available, the airway management, the drugs set for the, and then say at the same time inform the security staff, and because security point of view से भी ठीक है, ठीक, और क्या करेंगे आप उसके इसके अलावा सोशल जो है कि काउंसलिंग के लिए अलग आपके होंगे, सही। बाकी डन, ठीक है, आपने कर लिया कि इन्फॉर्म, बाकी उसको कर लिया। Now once you have received the patient, what will you do? I will immediately start resuscitating the patient, and I will get the control of airway. I will talk to the patient. He whether he's talking or not, I will clear his mouth, apply oxygen, and because he has chest stab wound in chest, I will immediately auscultate both his chest. I will percuss and see whether he has a pneumothorax or hemothorax. Then I will do thoracostomy, tube thoracostomy. First, I will do finger thoracostomy in fifth intercostal space, and followed by tube thoracostomy. I will attach with underwater seal and underwater seal. And here also has a Okay, you have I passed will the chest start tube. blood. I will Okay, start blood fluids and pass Foley's NG, okay, and the chest.
the chest, the initial drainage is 400 ml of blood. Okay, then I will shift because yes, I will because patient has multiple stab wounds in abdomen as well. I will while resuscitating the patient, I will shift him to OR and I will continue my अब resuscitation देखें in. इसमें लेट मी अब इसमें दौरान ही आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या करना है, आपने उसमें नहीं चलते हैं कि ये करते हैं जनाब, यू आर एज्यूमिंग कि ये है, ठीक है, ये होगा तो ये आपने थोड़ा सा कि एयरवे, आई विल टॉक टू द पेशेंट, पेशेंट कॉन्शियस, मैं कहूँ यस कॉन्शियस, थोड़ा थोड़ा बोलो, ठीक है। ठीक फिर ठीक I will assess the breathing. So what is the pulse saturation? Is the breath sounds equal on the both sides? Is there any entry wound? Where is the entry wound from the interior and posterior aspect? Just take a pause. फिर मैं कहूँगा yes, there is an entry wound in the left fifth intercostal space. Air entry is reduced on the left side. There is a you will ask me what the percussion note. I will say yes, it's a hyper resonant, right? So then we say, yes, this patient has developed. Is there any tracheal deviation? What is the blood pressure? And this patient is hypotension. There's a trachea is deviated toward the right side. So it's a tension pneumothorax. What will you do, right? तो आपने क्या करना है, इसको इस लेके जाना, स्मॉल 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 स्मॉल, थोड़ा पॉज लिया, एग्जामिनर मैं खुद आपको बोलूंगा, फिर अपने आगे चलते जाना, ठीक है, डन, ओके। We have placed the chest tube so that it has drained. अब chest tube डल गई तो आप, you will ask me कि what are the what is the amount of output? yes. What is the amount of output in chest tube? So initially it's a 400 ml. Okay, because the patient has abdominal injury as well, I will immediately get ultrasound fast. Okay, okay, wait. अब इसमें क्या करना, then I will again examine the chest, ठीक है ना, I will examine the air entry is equal, ठीक है, okay. Or what is the saturation right now after putting the chest tube? I will ये आप reassess. examine. I will reassess the saturation. Okay. And what is the saturation? Then what next? And then because the patient has a penetrating injury in abdomen, so I will plan laparotomy. I will inform theater that I am shifting the patient to OR, and I will do fast scan of the No, abdomen. देखें अभी स्ट्रेट अवे लेप्रोटमी पे नहीं चले जाओ, हो सकता है इट्स अ सुपरफिशियल वुंड, ठीक है, स्ट्रेट अवे हमने लेप्रोटमी, यू कैन आस्क मी व्हाट इज द पल्स, ब्लड प्रेशर, बाकी उसकी सिचुएशन क्या है, रिस्पांस क्या हुआ, एब्डोमेन की कहां कहां कित व्हाट हाउ मेनी एंट्री वुंड्स जो आपने की एब्डोमेन की, इज देयर एनी टेंडरनेस, इज देयर एनी डिस्टेंशन, ठीक है, जब होगा तो देन यू विल सी इफ द पेशेंट इज स्टेबल और अनस्टेबल. So if unstable, yes, you will get the fast scans. What are the indication for the exploration? वो उसी में जाएंगे. Is there any sign of peritonitis, impalement, वो सारी होगी. Stable है तो you can get the local wound exploration to see the any breach है fascia की कि नहीं है. ठीक है. ठीक है. तो suddenly उसको लेप्रोटमी नहीं कह देना कि मैं लेप्रोटमी की शिफ्ट करना है. चेस्ट ट्यूब आपने डाल दी है. ठीक. ठीक है. And then I will assess the patient. I will re-examine his abdomen just to see for any distension or any wound, any viscera coming out of the abdomen. I will also see the Yes. back of the. I will see the back of the patient. I will see. Then I will do secondaries after resuscitation. Okay, his abdomen is distended, is tender, and the omentum is coming out of the from one of the stab wound. Okay, it means that there is a peritoneal breach, and this patient need exploration. I will once patient is breathing. Okay, you have opened up the abdomen. You've noticed that there is a 2 centimeter rent in the sigmoid colon. What will you do? Okay, what is the time of injury? How much time has been passed from the? It's now 3 hours. 3 hours. Then I will see what is the level of contamination in the peritoneum. I will There's a minimal contamination. Okay, then I will systematically pack the peritoneum and see all the regions, both right and left subhepatic spaces, right and left subphrenic spaces. So there are no other injuries. Okay, and what is the size of it's 2 injury? centimeter. 2 centimeter. Okay, and there is a minimal contamination. Patient is stable or vitally stable or not? Yes, right now his patient is stable. And what is the level of contamination? It's a minimal contamination. Okay, and there is no small bowel or other large bowel injury? No. Okay, I will then see the anterior posterior aspect of the injury, and because it is a sigmoid colonic injury, there are two options. If there is a minimal contamination, we can, but I will do the sigmoid loop colostomy.
because repair in this left side of the gut is risky in these patients, because the chances of leak is more. But if their It's patient, a stab wound. It's a stab wound injury. So yes, with the minimal contamination, patient is hemodynamic stable. So why are you going for the colostomy? because on the left side of colon, chances of leak are high. If I would have to repair the colostomy, then I will have to add a proximal ileostomy. I have to make stoma in any case. So I will bring that loop outside as an emergency Okay, measure. thank you, sir. Numan, आप कुछ ऐड कर दें सर. ठीक है मेरे ख्याल में कोलोस्टमी का डिसीजन मेरे ख्याल में सेफ है, ठीक है। बाकी वो अगर रिपेयर करना भी है तो वो फिर एक लंबी कहानी, ऑन टेबल लवाज वगैरह आपको करना पड़ता है, जो कि बहुत कम लोग मैंने देखा करते हैं। हाँ, उसके इसके अलावा अंदर साथ बाकी ये देख लें कि कोलन कंटेमिनेशन का पूछा है, साथ से ये पूछ सकते हैं आप ये कोलन लोडेड है कि नहीं है, हम्म, कोलन कैसी है, हाँ, ठीक है, एम्प्टी है, लेकिन लोडेड सेफ, कोलन है. हम्म. ये खैर सेफ अप्रोच है, कोलोस्टमी सेफ अप्रोच हाँ, यही है वैसे मेरा। तो लेकिन उसमें ना उसपे जल्दी उस पे आ जाए, जब आपको कह दिया ना कि देयर नो अदर इंजरीज, देयर 2 सेंटीमीटर, आपने अच्छा किया कि मैं मेजेंटेरिक एंटी मेजेंट दोनों देखूंगा कि उसके दो तरफ फ्रंट है कि नहीं, वो आपने देख लिया. आप फिर उस पे जल्दी उस पे आए जब आप कह दिए कि और कोई इंजरीज नहीं है, पेशेंट हीमोडायनामिक स्टेबल, मिनिमल कंटामिनेशन है, तो उस पर डिसाइड करें क्या करना है आपने. आपने क्लास्टमी करनी है तो ओके जी क्लास्टमी करनी है, फिर आपको उसकी जस्टिफिकेशन का जो ना, ठीक है. बाकी ठीक है अपना, हाँ, बाकी ठीक है अपना। ओके, चलिए आपको a young male patient has presented to you. He has reported to you with the ultrasound of his neck, which shows uh, one nodule in the right side of the lobe of the thyroid and the two nodules in the left lobe of the thyroid. What will you do? I would take the thorough history from the what is the how many days these nodules have he noticed, what are the complaints, is there any signs of toxicity, he has tachycardia or There are no signs of toxicity. I would ask him about any history of voice change or any No, history of weight loss, and no if I voice change. take any previous history of radiation, any family history of any Yes, the cancer. patient is a CT technician. Okay, it means that patient has history of radiation exposure, and then I will examine his swelling. What is the size of swelling, and what is there any in addition to thyroid swelling? Is there any swelling in the neck? Lymph nodes are palpable or not? I would also examine his skull. I will examine his chest, Okay, ribs, so spine. there's no palpable lump. Okay, then I will do the thyroid function test. I will ask him They're to normal. thyroid function tests are normal, and then I will do ultrasound of the neck to see The whether this ultrasound has already been done. what is the side, is there solid swelling or cystic swelling? So the right side, it's a 7 millimeter, 7 into 6 millimeter, and the left side is again a sub-centimeter cystic lesions. On the right side is solid. Okay, then I will do the FNAC of the suspicious lesions and see the report. What is the FNAC report? Because patient has been having Okay, FNAC shows the papillary carcinoma. okay, papillary carcinoma, and there is a lymph node are No visible lymph or node papilla. No lymph node. okay, then I will discuss the patient. No, size of the swelling is one is 0.7 centimeter, and 0.7. other is They're 0.5 into 0.8 centimeter. and what is the okay the FNAC repeat reveal the thyroid parathyroid sorry Papillary. papillary Mm, lesion. So mm. there is a approach to the papillary lesion because these patients have uh, uh, high chances of developing. I will follow the because lesions are small. I can there are two options. I will discuss with the patient. Either I can follow the patient for next 6 months and see whether this increase or not. And the safe option is that I should proceed with the total thyroidectomy, although the risk of malignancy, risk of Okay, death. suppose the lymph nodes, it's a palpable lump, and in the posterior triangle of the neck, and then what will you do?
It means that there is a metastasis of the lymph node. Then I will do with a total thyroidectomy, offer the patient with a total thyroidectomy to remove the risk of further Okay. increasing. You will get the FNAC of the lymph node. Yes, yes. So that shows papillary carcinoma. So then Yes. what will you do? Total I, thyroidectomy. yes, although the patient is male, he has a radiation exposure, he is low risk, but as he has multifocal lesions, and so I will offer him total thyroidectomy. Total thyroidectomy. Okay. Any other specific thing in the total thyroidectomy and Along with only total the thyroidectomy? along with the lymph node, selective lymph node dissection of the affected Selective area. lymph. That Okay. yes. Thank you. अब इसमें देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो रह गई है, बाकी आपने सारी कर दी है। ट्यूमर बोर्ड मीटिंग। ट्यूमर बोर्ड मीटिंग ये अपने रखना है कि जी ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करेंगे। जो पहले सिनेरियो दिया था ना आपको कि आपके ये सॉलिड लीजन है, तो इनिशियली आप उसको पूछ रहे थे कि अल्ट्रासाउंड में फीचर्स क्या है, इसकी वेस्कुलरिटी कैसी है, सस्पिशियस है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड भी आपको पता है कि मैलिग्नेंसी के फीचर्स हैं कि नहीं है। ठीक है। देन अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनए, पेशेंट से काउंसलिंग करेंगे ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में, डिस्कस इन द ट्यूमर बोर्ड मीटिंग। एंड देन one option is to follow this patient 6 monthly, repeat the scan. The other option is going for the FNA. ठीक है। FNA कराई और उसके आ गया तो देन अगेन फॉलो अप पे रह सकते हैं। अगेन ये कौन करेगा डिसाइड? ट्यूमर बोर्ड मीटिंग। आपने इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेना। पेशेंट काउंसल करेंगे, उसको ऑप्शन देंगे कि इसके क्या है प्रोज एंड कॉन्स, है ना। ठीक है। तो बाकी देखो, और दूसरे नंबर जब नेक डिसेक्शन की होगी, इसमें फिर आ जाएगा मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन, क्योंकि लेटरल में ना। ठीक है। लेटरल में जैसे मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन, उसमें आप हेड एंड नेक सर्जन को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है। ठीक हो गया सर। आप तो कुछ और कोई बताना चाहें सर? ये जब 2 या 3 नोड्यूल्स हो, ये क्लियर करें ना कि सारों की एफएनए हम कराएंगे, क्योंकि मेरा तो हाँ ख्याल है सारों की कराएं। सर, वही से आप अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही पूछ लेंगे ना कि अल्ट्रासाउंड पे बताएं। आई विल डिस्कस विद द फीचर रेडियोलॉजिस्ट कैसे है? फीचर्स क्या है। अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन करें ना थायराइड के, जिसपे आपको उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, लो रिस्क है, इंटरमीडिएट है, या हाई रिस्क फॉर द मैलिग्नेंसी है। जिस तरह एफएनएसी की है ना ग्रेडिंग है, इसी तरह ही अल्ट्रासाउंड में भी इसकी है। तो आप उसकी वेस्कुलरिटी पे वो बताएगा कि इसकी अगर वेस्कुलरिटी ज्यादा सॉलिड लीजन है, वेस्कुलरिटी उसकी ज्यादा शक्ल कैसी है? है। टॉल, हाँ ग्रेटर देन, उसके बिल्कुल, तो बाद जो है उसके वो ऊपर सारा। देखो। राइट, जब राइट पे पेपिलरी आ गया तो फिर आप लेफ्ट पे भी कंसंट्रेट नहीं करेंगे, जो लेफ्ट की भी आपने बताई है, लेफ्ट पे या सिस्टिक उसको एज्यूम करेंगे कि, या उसको अब एज्यूम ये कर लेंगे। अच्छा सर, वैसे भी ना पेपिलरी जो वैसे भी लेस देन 1 सेंटीमीटर कई जगहों पे तो उसकी बायोप्सी भी नहीं करते। लेस देन माइक्रो कार्सिनोमा उसको कहते हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर, कि अच्छा, इसका जो नेचुरल हिस्ट्री है वो बड़ी बिनाइन है। ठीक है। लेस देन 1 सेंटीमीटर कई जगहों पे तो जापान या इस तरह के ना, वहां पे तो इसको करते ही नहीं है, एफएनए भी नहीं करते, बायोप्सी नहीं करते। ये भी ना तो हर हर जगह का प्रोटोकॉल फर्क है ना। तो और इस बार बेहतर इसीलिए ना कि ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में इसको ले जाएं ट्यूमर बोर्ड और असल में ना पेशेंट जब का हम शेयर डिसीजन मेकिंग में ले जाएं। कि वो फॉलो अप पे आ सकता है वो उसके बाद जो ना, क्योंकि ये मुझे याद है जब हम फेलोशिप कर रहे थे उस वक्त तो वो कहते थे जब भी पेपिलरी कार से स्ट्रेट अवे आप थायराइडेक्टमी करें ना टोटल, हम्म बिकॉज इट्स अ मल्टीफोकल डिजीज। हम्म ठीक है, मुझे याद है शुक्र साहब कहते थे कि आपने ना जवाब देना टोटल थायराइडेक्टमी ना। हम्म ये अभी आ गया है कि जो है ना वो जो लो रिस्क और हाई रिस्क ग्रुप का जो चक्कर चला दिया इन्होंने ना कि लो रिस्क और हाई रिस्क में आप फॉलो भी कर सकते हैं मरीज को। अब तो क्योंकि क्योंकि पेपिलरी का मसला ये होता था कि ये मल्टीफोकल होता था ना। तो पहले यही कहते होते कि मल्टीफोकल है। अब डिस्पाइट द मल्टीफोकलिटी वो कहते हैं कि इसका जो पेशेंट का सर्वाइवल है ना, वो जी सर, उस पर फर्क नहीं ना पड़ता। भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसके सारा जो है ना, तो आप मोर ट्रेंड जो है ना उसमें आते, लेकिन वही बात है वो उसमें आ जाए ना हमने कि जी इंडिकेशन रेडियो आयोडीन एब्लेशन की है कि नहीं है। हम्म, Again, what is the size of the lesion? More than 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा थायराइड इन्वेजन है। ठीक है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, मेटास्टेटिक डिजीज है, पूरे डिफरेंशिएटेड आ रहा है। ठीक है। या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन है, उसके अब अंदर इसको रेडिएशन की इंडिकेशन। हिस्ट्री है। हाँ, दैट इज इंडिकेशन फॉर अच्छा, टोटल अगर थायराइड। और अगर फेमिलियल भी है, फेमिलियल कैंसर जो होते हैं ना वो भी जो है ना उनकी भी टोटल थायराइडेक्टमी करनी है लाजमी। पेपिलरी का मेन रेडिएशन के साथ है। हम्म। ठीक और है। अच्छा, मेडुलरी जो है वो तो किसी भी छोटा सा भी हो तो उसको निकालना है ना टोटल थायराइडेक्टमी हाँ बिल्कुल, मेडुलरी। वो क्लियर, बिल्कुल उसमें कोई वो शक नहीं। टोटल थायराइडेक्टमी विद सेंट्रल नेक लिम्फ नोड डिसेक्शन। अच्छा जी। चलिए मैं एक और आपको सिनेरियो देता हूँ। A 50-year male patient has presented in the emergency department with history of abdominal pain
abdominal pain, distension, and absolute constipation. His abdomen is markedly distended. What will you do? I will first of all take the history from the patient about the duration of the symptoms. What is the duration of symptoms? He developed these symptoms 2 days ago. Okay, then I will ask the history about any history of previous operation. I will ask No, history of there's any no drugs, previous operation. any history of previous drugs, anticoagulants, any cardiovascular history. No. I will start resuscitation. I will examine the patient whole abdomen, and I will see his hernial What are you orifice. suspecting? I am suspecting intestinal obstruction, and Okay. I will try to find the cause. I will see his hernial orifices. I will simultaneously start resuscitation. I will pass NG tube. I will pass two large IV lines. I will start fluid Okay. resuscitation. Patient had a similar episode. Patient had a similar episode about 3 months back, and it was spontaneously relieved. Okay, there is any history of hernia or any history of No, drugs, no history of hernia. any history of drugs here, calcium channel blockers, or what is the age of the patient? It's 54. So what will I your will next step? So I will after do the history and a clinical examination. Okay, then I will examine his abdomen and see bowel sounds. They are absent. Then I will do the X-ray abdomen, erect and lateral deep pubis and supine, and see the air fluid levels. I will try to differentiate whether it is large bowel obstruction or small bowel obstruction, and it is true Okay. obstruction or what is the cause. I will Okay. do the CT scan of the abdomen. So you on the X-ray abdomen, you notice that a loop of bowel is running across the abdomen diagonally. Okay, it means that the patient might has a sigmoid volvulus. I will do the digital rectal examination, and then I will do the proctoscopy and see whether, and then I will try to do what is the vital signs of the patient. He is stable or he is hypotensive. So the patient is right now, his blood pressure is 110/70. His pulse is 100. Okay, I will do the sigmoidoscopy and try to reduce this sigmoid volvulus with the sigmoidoscope in order to convert this emergency into elective case. So Uh, during sigmoidoscopy, what will you keep in mind I will before keep in mind, derotating it, before decompressing it? I would keep in mind that there should be no ischemia of the bowel, and How will you come to know that? I will see whether there is a color of the bowel. I will see, and I will see whether there is So you fatigue. notice that they're the mucosa, they're the patches of the necrosis, they're the black patches. Then Okay, what will you do? and then I will counsel the patient, and if my attempt of sigmoidoscopy is unsuccessful, then I can plan. I will inform the OR. I will take consent, and after resuscitation, I will take the patient to OR, and I will take For also try for to what for what will you do? laparotomy. For I will laparotomy and and then I will do the sigmoid. I will derotate the sigmoid and see the viability of the gut. If it is viable, then I can uh, leave. I okay, will thank you. Thank you. I will do the sigmoid colectomy, and then I will bring proximal as mucus fistula and distal as proximal as colostomy and distal as mucus fistula. ठीक है. अच्छा इसमें जो था ना जैसा मैंने सिनेरियो को बनाया अब स्टार्ट में सिग्माइडोस्कोपी इसमें बेहतर है कि अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लें इफ इज हाँ नॉट खुद ना अवेलेबल तो कर फिर ठीक है ना उसको इन्वॉल्व करो और दूसरे नंबर पे आपने जब दे दिया ना कि जी स्कीम नेक्रोज है मिकोजा तो उसको डीरोटेट नहीं करना ठीक डीरोटेट है करेंगे तो इसका मतलब है कि इस्कीमिक है सही है गैंग हो चुकी है रिवर्सिबल जब वो करेंगे हम्म, तो पेशेंट रीपरफ्यूजन इंजरी हो सकती है तो उसको ठीक डीरोटेट नहीं करेंगे वैसे ही आप सिग्माइड कोलेक्टमी करेंगे ठीक ठीक है ना तो ये उसमें एक कैश पॉइंट है बाकी तो आपने डीकम्प्रेस अगर कर लिया तो देन इट्स इलेक्टिव होगी आपकी उसकी अच्छा सर्जरी इलेक्टिव में भी करनी तो सिग्माइड कोलेक्टमी है ना, इसको हाँ छोड़ना नहीं है तो आपने अगर नहीं क्योंकि खोल ली ना, अगर आपने खोल ली है तो सिग्मॉइड कोलेक्टोमी तो करनी ही करनी है। हाँ अगर नहीं आपने नहीं खोल लिया पेशेंट तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका डी रोटेट हो भी गया है सिग्मोइडोस्कोप से तो कोलेक्टमी तो उसकी फिर भी करनी है क्योंकि चांसेस ऑफ रिकरेंस इसमें काफी ज्यादा होते हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, बहुत कोई ओल्ड या फ्रेल पेशेंट हो उसमें आप शायद नहीं करते, बाकी आप करते हैं ऑलमोस्ट हर केस में।
अच्छा, चले मैं एक और आपसे भी पूछ लेता हूँ। अच्छा सर, ये सिग्मोइडोस्कोप से जो है, रिजिड सिग्मोइडोस्कोप से इसको डिरोटेट करने की कोशिश करते हैं। अगर पहले नंबर तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उससे करवाएं। इफ इट्स नॉट अवेलेबल तो फिर आप यू कैन डू जो हमारे पास रिजिड सिग्माइडोस्कोप, यू कैन पुट इन द रिजिड सिग्माइडोस्कोप। बाकी तो हमारे अब यहाँ पे मुझे नहीं पता, यहाँ पे भी हमारे पास भी ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अलग है, सर्जन ही यहाँ पे अपनी एंडोस्कोपी नहीं करते। नहीं नहीं, हमारे यहाँ भी इधर अलग है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इधर ही करते हैं तो है। फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें, फिर हम्म, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को उसमें लगा। हाँ, अगर फिर वो आपको एग्जामिनर्स में डालते नहीं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नॉट अवेलेबल, तो हम्म, फिर आप उसमें आते कि ठीक है, फिर आप उसकी जो है ना सिग्माइडोस्कोपी वाला जो है ना, वो भी अगेन कि आप इफ यू आर डूइंग इट, हम्म। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके टाइम ड्यूरेशन भी कोई है, कि इतने टाइम के अंदर आएगा तो ड्यूरेशन करें 4 से 3 घंटे? नहीं नहीं, वो तो देखिए पेशेंट के साइन सिम्टम्स से पता चलेगा कि तो पेटनाइटिस है, उसमें साइन सिम्टम्स हैं उसकी, आपको लग रहा है तो फिर तो नहीं, लेट्स सपोज उसको वॉल्वुलस 1 दिन से हुआ हुआ है, तो उसमें तो वैसे भी गैंग्रीन हो चुकी होगी ना, तो उसमें रीरोटेशन करने की तो मेरे ख्याल है कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो उसके अगर हुई हो गैंग्रीन हुई होगी तो नहीं देखा जरूरी टेंडर भी। सर, हाँ सर, हाँ सर बताएं। मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है गैंग्रीन हुई हो, क्योंकि वॉल्वल्स में भी शुरू में ऑब्स्ट्रक्शन ही होती है। गैंग्रीन हर केस में नहीं होती। हाँ बिल्कुल। अक्सर मतलब सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन के साथ कि, फीचर आते हैं। कितना उसका बल पड़ा हुआ है ना, हम्म। ठीक है। अच्छा, डी रोटेट करें तो क्या करेंगे, किस तरफ से करेंगे भाई, किस क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? मेरे ख्याल है एंटी क्लॉकवाइज करते हैं इसको। है सर? हाँ, क्या हुआ? ये डी रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ये होता एंटी क्लॉकवाइज में होता है ना, जब ये होता है हम्म। तो मेरे ख्याल में फिर क्लॉकवाइज करेंगे। अच्छा, ये इसको चेक करेंगे, आई एम नॉट श्योर ये ये इसको किस तरफ। ऑलमोस्ट तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये तो मुझे हम्म। याद है। हाँ, लेकिन मैं भी उसको चेक कर लूंगा कि भी किस, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो हाँ जी बताएं जी, क्योंकि है भी इंपॉर्टेंट है कि आप करते हुए भी ना, कि अदर हम्म। अपोजिट में करेंगे तो हम्म। और उसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी बहुत है उसको भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना। अ, अच्छा, एक ब्रेस्ट का कोई पूछ रहा, ब्रेस्ट रिवाइज हो जाए। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, एक मिनट मैं, हम्म। okay. A 42-year female patient has presented to you in your clinic with the history of right-sided breast lump. She noticed this lump 6 months ago. Um, how will you approach this patient? First of all, I will take history from the patient about her age. She is 42 years old. She is married or unmarried? What is her age of menarche? Is she menopausal or not? Is she married and is she has kids? History of breastfeeding, history of any previous radiation, and taking any sorry, oral contraceptive pills, and family history of breast cancer. Then I will examine the patient. What is the size of the lesion? What is the relationship of the lesion with the skin? It is mobile to the skin and surrounding structure. Okay. I will examine both of her breasts and axilla. इसमें हिस्ट्री कहते हैं ना, अब देखिए एक मैं आपको बताता हूँ कि इसको बोलने के लिए ना, आप कहेंगे स्टार्ट, आपने ये बताया रिस्क फैक्टर मुझे बताया ना, तो आप कहेंगे आई विल ड्यूरिंग द हिस्ट्री आई विल आस्क द क्वेश्चन, आई विल आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सीए। बस इसके अंदर ठीक सारी जितनी हमने मुझे बताई है ना, रिस्क फैक्टर फॉर सही। द सीए, वो सारी आ गई। बाकी ठीक। उस पे कहेंगे आई विल टेक द हिस्ट्री अबाउट द लंप, हिस्ट्री ऑफ लंप एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स, ठीक हो गया। तो उसके कीपिंग इन माइंड द डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि ये मेरे सीए है और बाकी चीजें, अब उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। And then I will. हाँ, so in the okay, so this the lump is there for this. She noted the lump 6 months ago, and it is on examination. It is 5 centimeter lump in the right upper outer quadrant. Okay, I will see whether this lump is hard, it is attached to the skin or underlying structure, or what is the status of axilla. I will see the want like to know the status of nipple, So and yes, there are fixed lymph nodes in the axilla, right axilla. okay, and I would also like to see the other contralateral breast. Is there any It's lump in the normal. breast? I will ask for any metastasis, that is symptom is the skull, bone, lungs, any abdominal pain, and then I will do the triple assessment of the lump.
I will do ultrasound to see whether it is solid or cystic, and then also along with ultrasound, if it is solid mass, ultrasound of breast and axilla I will do, and if it is a solid mass, then I will do ultrasound guided true cut biopsy along with the receptor status, and Okay. then also I will do mammograph and Okay. then wait. Mammogram shows it's BI-RADS 5. Okay, by rates 5, I will wait for the biopsy report along with receptor status, and I will because the patient has I will also do the auxiliary assessment and take this patient to the tumor board meeting with all the reports Uh, Reports for the you have sent the specimen for what? for biopsy and receptor status. Receptor status. So ER, Yes. PR, and HER2 new Yes. status. Okay. So it's invasive ductal carcinoma. Is It's triple negative. Okay, it means that a patient has because patient has a locally advanced disease clinically. I will check for metastatic workup. I will do There are chest. no distant match. Okay, then I will discuss this case in tumor board meeting regarding management, and I will discuss this case with the patient as well and give her the options regarding treatment. I will give her, it is triple negative, so we can start her with the new adjuvant chemotherapy to downstage the tumor. And I will ask the radiologist to mark the tumor, and then I will see the response again in the tumor board meeting after. I will take on board How will all stakeholders, whether medical oncologist, radiologist, and uh, Okay. So plastic surgeon. the chemotherapy has been started. So then what will be the next step? After chemotherapy, we will after 2 weeks, we will 3 weeks, we will assess the response and see whether this tumor is regressing or it is not regressing. Yes, the size has reduced. Initially, the 5 centimeter. So after 2 cycles, it is right now it is 3 centimeter. It has Okay. reduced. Okay. Okay. Then I will continue. I will request the oncologist to complete the chemotherapy cycles, and after chemotherapy, we will. I will offer her two options. Whether I will plan a modified radical mastectomy along with axillary clearance because patient has axillary lymph nodes as well. So the patient is not willing for modified radical mastectomy. She is asking for the breast conserving surgery. Okay, then I will again discuss this issue with the plastic surgeon and patient. I see whether conservation is possible or not because I will ask about any history of collagen vascular disease or any history of skin disease, previous radiation, which are the contraindication for breast conservation surgery. And I will see whether this tumor can be resected with clear margins, and what is the volume of breast remain behind. If it is Okay. possible, then I will refer this patient to the breast surgeon for conservation. If patient does not want to have modified radical mastectomy. Okay. Patient has given you the consent for the modified radical mastectomy. Then what will you do? And then I will perform a modified radical mastectomy along with the axillary dissection. I will remove the breast along with the axillary tail, and I will do level 2 axillary clearance. Okay. So And after okay, right. post So during the surgery, during your axillary, how will you perform the axillary clearance? I will, after removing the breast, I will continue the dissection up to the, my superior extent of the dissection will be up to the axillary vein and posteriorly along So from where the, will you start your axillary dissection? I will start my axillary dissection from clavipectoral fascia and on the lateral border of pectoralis major muscle, and I will go into the axillary tail. I will go to the axilla while taking care not to injure thoracodorsal nerve, long thoracic nerve, and intercostobrachial and lateral and medial pectoral nerves. Okay. Okay. And, Right. So you have done your mastectomy. So now the patient in the post-operative phase. So you have discharged the patients. So the patient has reported back to you for the first follow-up visit. okay, So then I will see the report of the histopathology report that what is the
report and how many lymph nodes have been extracted and how many lymph nodes are positive for the tumor. Then I will, because patient is triple negative, I will again take a case to the tumor board for completion chemotherapy. And after that, I will also like to do radiotherapy of the chest wall in order to minimize the, according to the tumor board recommendation, we have to give radiation to the chest wall post-operatively to remove the microscopic disease. Okay, thank you. अब इसमें भी ना you went very well, बाकी सारा आपका अच्छा उसमें से चलते गया, ठीक है। लेकिन जो एक चीज जो बार बार मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा जवाब दो, ठीक है ना, और एग्जामिनर से उसका जवाब लो पहले, फिर उसके आगे जाओ, ठीक है ना। ये अपना जो है ना, और दूसरे ने हर चीज को खुद भी नहीं कि मैंने करना है। अब जो चीजें ऑन्कोलॉजिस्ट की उसको करने दें, वो बोलना भी इसी तरह ही है, ठीक है ना। शो भी अपने करना है कि ये वो कर रहा है, ठीक है। और इसमें कौन सी वाली चीज अब, और तो मेरे वो बता दे, लिमिट्स ऑफ डिसेक्शन होती है ना। हाँ, यस। आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पहले एक्सिलरी वेन को अपने आइडेंटिफाई करना है ना, कि वेयर इज एक्सिलरी वेन, उधर से आप ऊपर से फिर नीचे आते हैं। और आपकी इंटीरियर लिमिट क्या हमने बतानी है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिमिट क्या है एक्सिलरी डिसेक्शन की। पोस्टीरियर एलडी है, हाँ, ऊपर तो एक्सिलरी है। हाँ, ऊपर तो एक्सिलरी वेन है, हाँ, नीचे जो है ना सरफेस, इंफीरियर सरफेस तो स्किन है, और पोस्टीरियरली एलडी है, लिटिस हाँ, डोर्सा है, और और इंटीरियरली एंटी पेक्टोरलिस पेक्टोरलिस। में लैटरल बॉर्डर, ठीक है। तो आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्सिलरी वेन। इंफीरियरली क्या है? इंफीरियरली मैंने कहा क्या है? इंफीरियरली क्या भाई? स्किन है ना सर, स्किन है ये तो। स्किन नहीं, कितनी स्किन? नहीं, स्किन नहीं, ये अच्छा, जो इसकी रिब जो है ना, मेरे ख्याल सर, मेरे ख्याल फिफ्थ रिब है शायद। वो तो ब्रेस्ट की है, वो तो ब्रेस्ट की आप लिमिट नहीं, बता रहे हैं। एक्जिला में भी ना कितना का आपने क्लियर करना है ना। एक तो ये है, ठीक है, आपने सारी नर्व्स आइडेंटिफाई कर ली, सारा ऊपर फाइब्रो फैटी टिश्यू उठा लिया, और पीछे सबस्कैपुलर मसल आपको विजिबल है, एलडी मसल आपको विजिबल है, ठीक है। तो नीचे जहां तक मुझे है कि फिफ्थ मेरा ख्याल है, अब एग्जैक्ट मैं कोई गलत ना बताऊं, मेरा ख्याल फिफ्थ रिब है। फिफ्थ का ही है शायद। हम्म। फिफ्थ का ऊपर बॉटम है। और कोई चीज सर इसमें ऐड कर दे, बाकी अच्छा इसने जवाब दिया। अब बाकी वही है कि खुद रेडियोथेरेपी वगैरह ना कर, कीमोथेरेपी खुद ना कर, ये बस कह के ट्यूमर बोर्ड और ऑन्कोलॉजिस्ट का काम है। ठीक, फिर अगर वो मजीद घुसते हैं तो फिर उनको बेशक बता दे, लेकिन ये उनके जिम्मे रहने दे, क्योंकि अक्सर प्रैक्टिकली भी हम तो नहीं ये करते ना, ये तो उनके डिसीजन पे छोड़ देते हैं हम। हाँ जी। अच्छा चलिए, मैं एक और चल आपको काफी है यार इसको। हाँ काफी कल, है मेरे हाँ ख्याल। बिल्कुल, क्या टाइम हो गया बोला? 10 हो गया सर। 10:15 हो गए। हाँ, तो मेरे ख्याल तूने कल सोना भी है, तो मेरा ख्याल हम फिर, और कोई तेरे को सवाल है, को पूछना है तो वो करना है, अदरवाइज रिलैक्स करो, सर अब तो दिमाग बंद हो चुका है सर। है ना। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। सर, हाँ, बस कल टेस्ट दे के फिर लाजमी कल आना है, कल कल क्लियर लाजमी करेंगे है ना, कल इंशाल्लाह। तूने आगे में बताना है फिर। सर मैं जरूर सर। हाँ, ठीक है। ओके सर, दुआ कीजिएगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल क्लियर इट इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ओके हाफिज़ भाई, सर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर, सलाम। ओके यार।